Hello, my dear viewers. My name is Anwar Hussain Barbiya and I welcome you to my channel AHB Physics. We are studying moving charges and magnetism, that is chapter 4 in class 12 physics. So, we have one more topic left, that is moving coil and galvanometer, that we will study after solving these numericals. So we are now going to solve the NCERT exercise. So in NCERT exercise we have nearly 12 to 15 numericals are there. So in the first class we will solve 5 numericals, 4.1, 4.2, 4.3 and 4.4, 4.5. So total 5 numericals we will solve in this class. So what is the first numerical? The first numerical is a circular coil. So there is a circular coil, means there is a circular coil of wire. So it is made up of wire consisting of 100 turns. So how many turns are there in the coil? There are 100 turns. Each of radius 8 centimeter. हर एक जो कॉइल है मींस जो टर्न है टर्न्स का रेडियस कितना है? रेडियस इज 8 सेंटीमीटर है. Here is a current of 0.4 एम्पियर और इसके अंदर एक करंट फ्लो होता है. The current is 0.4 एम्पियर. So if we consider that we have a circular current carrying coil, say this is a circular current carrying coil. Through this coil there is a current. So the current through the coil is 0.4 ampere and the radius of this coil, say that radius is r and radius is given as how much? Radius is given as 8 centimeter. And how many turns are there? So one complete turn, second turn, third turn, like this. There are how many turns? There are 100 turns in the coil. So there are total 100 turns in the coil. What is the magnitude of magnetic field B at the center of the coil? तो ऐसे एक न्यूमेरिकल आपने एग्जांपल में भी सोल्व किया था. सेम न्यूमेरिकल था, डाटा अलग था. So what is the magnetic field due to a circular coil at the center of it? If you consider that we have a circular coil. Suppose the radius of this coil is r at any point, say that point is P. So what is the magnetic field at point P? The magnetic field at point P magnitude is how much? It is mu naught I r square divided by x square plus r square whole power 3 by 2. So what is the magnetic field at the center of this coil? Magnetic field at the center of the coil is mu naught I divided by 2r. That derivation you have done. कहाँ पे किया है आप लोगों ने? Biot-Savart law में किया है. That is application of Biot-Savart law. तो यहाँ पे अगर एक सिंगल टर्न के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना है? सिंगल टर्न के लिए मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r. अब कॉइल के अंदर अगर n टर्न होगा तो एक टर्न के लिए इतना है. तो n टर्न के लिए कितना होगा? n टर्न के लिए n से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो इट विल बी n म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r. है कि नहीं? सो ये फार्मूला आपको यूज करना है, इसको सोल्व करना है. ठीक है. ना एक चीज आपको जब भी न्यूमेरिकल करना है, जैसे मान लीजिए ये एक्सरसाइज है, अभी मैं इसको आपको सोल्व करके दे रहा हूँ. बेसिकली अगर ये कॉलेज में होता है तो मैं सोल्व करके नहीं देता हूँ, वो होमवर्क होता है स्टूडेंट के लिए. स्टूडेंट उसको करते हैं. अगर स्टूडेंट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक हिंट्स दे देता हूँ कि इसको ऐसा करना है, इसको ऐसा करना है, इसको ऐसा करना है. ऐसे सोल्व करके बिल्कुल नहीं देता हूँ, लेकिन अभी मैं सोल्व करके दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग मेरे साथ सीधा नहीं हो, इसीलिए मुझे सोल्व करके देना पड़ रहा है. आप लोग एक काम करना, सी ये जो मैं करा रहा हूँ दिस इज बेसिक नेसेसिटीज. इससे आपको फायदा होगा. मीन्स आपका जैसे हमारा बेसिक नेसेसिटीज क्या होता है, जैसे खाना कपड़ा मकान होता है, वैसे आपको फिजिक्स का जो बेसिक नेसेसिटीज है वो मैं सारा दे रहा हूँ. लेकिन इससे सारा फिजिक्स नहीं हो जाएगा. अगर आपको फिजिक्स में अच्छा मार्क स्कोरिंग करना है, आप कोई भी एक बुक निकाल लीजिए, SLR हो, प्रदीप हो या फिर दिनेश हो, जो आपके पास रेफरेंस बुक है उसको निकाले के वहाँ से पहले सोल्व प्रॉब्लम को कीजिए, फिर अनसोल्व प्रॉब्लम्स को ट्राई कीजिए. आप जितना से ज़्यादा न्यूमेरिकल करेंगे उतना ज़्यादा आपका कंसेप्शन जो है वो क्लियर होगा. तो इसलिए आप कोशिश करना करना ही है. आपको अगर अच्छा मार्क्स स्कोर करना है फिजिक्स में तो आपको करना ही है. बुक निकालिए, क्वेश्चंस लीजिए, सोल्व करते रहिए. ठीक है. और ये बेसिक नेसेसिटी जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ. सो आपके पास क्या दिया हुआ? यू आर गिवन number of turns in the coil. So number of turns, if we denote it as capital N, number of turns is given as 100, each of radius 8 centimeters. So what is the radius? Radius of coil, if we denote it as r, the radius is given as 8 centimeters. That means it is 8 into 10 power minus 2 meter. Here is a current. So what is the current in the coil? There is a current. That current in the coil is
0.4 ampere. What is the magnitude of magnetic field B at the center of coil? So magnetic field at the center of coil is magnetic field at the center of coil is B. So this magnitude will be equal to N times mu naught I divided by 2R. तो एक टर्न के लिए mu naught I by 2R, हमारे पास कैपिटल N टर्न्स है तो उससे मल्टीप्लाई करो, यू गेट द टोटल टर्न्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा. सो कैपिटल N कितना है? इट इज 100 है. mu naught कितना है? mu naught इज 4 pi into 10 power minus 7. Current I is 0.4 divided by 2R. So 2R is radius, so it is 8 into 10 power minus 2. You are finding magnetic field, so SI unit is Tesla. So the magnetic field will be equal to 0.1 pi 10 power minus 5. So the magnetic field B will be equal to pi is 3.14 into 10 power minus 6 Tesla. So the magnetic field is 3.14 into 10 power minus 6 Tesla. Copy कर लीजिए. कर लिए. So now we'll solve exercise 4.2. The question is, a long straight wire carries a current of 35 ampere. Means we have a long straight wire. Say we have a long straight wire carries a current of 35 ampere. So there is a current through this wire. What is that current? The current through the wire is 35 ampere. What is the magnitude of magnetic field B at a point 20 centimeter from the wire? What is the magnitude of magnetic field B at a point 20 centimeter from the wire? So we know that if there is any current carrying wire, say this is a current carrying conductor. So if the thumb points in the direction of current, the curved fingers will give the direction of magnetic field. What is it? It is right hand rule. So अगर हम लोग बोलते हैं there will be magnetic field loops around this current carrying conductor. So what will be the direction of magnetic field loops? This will be the direction. So the direction is clockwise. So the direction is clockwise. फिर से देख लेते हैं. It is clockwise. So the direction of current is clockwise. Now, what is the magnetic field at a point? How much? What is the magnitude of magnetic field B at a point 20 centimeter from the wire? So distance कितना है? ये जो distance है, the distance is equal to 20 centimeter. तो 20 centimeter दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इस पॉइंट पे? मान लीजिए ये पॉइंट P है और यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, so what is the magnitude of magnetic field? It is given as mu naught I divided by how much? It is 2 pi R. ये आप लोगों ने पढ़ा था इनके सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन. मैग्नेटिक फील्ड जो है स्ट्रेट कंडक्टर, तो उस फॉर्मूला को यूज करके आप निकाल सकते हैं. So long straight wire carries a current of 35 ampere. So you are given current in the wire. Current is I. It is given as how much? 35 ampere. What is the magnitude of magnetic field at a point? So you are given the distance R. Distance R is 20 centimeter. That means it is 20 into 10 power minus 2 meter. तो मैं पावर में लिखता हूँ, इससे क्या होता है आपको कैलकुलेशन आसान हो जाता है. 10 पावर माइनस 1 मीटर, इसको तो 0.2 भी लिख सकते हैं. So 2 into 10 power minus 1 meter. This is the distance. So what is the magnitude of magnetic field? Magnetic field B is how much? It is mu naught I divided by 2 pi R. What is mu naught? Mu naught is 4 pi into 10 power minus 7 into I. What is I? Current 35 ampere upon 2 pi R. What is radius? Radius is 2 into 10 power minus 1. So आप magnetic field निकाल रहे हैं, ऐसा ही क्या होगा? Tesla. So the magnetic field B is pi will get cancelled, so it will be 2. Or 2 to the 4, 4 will get cancelled, pi will get cancelled, means this part will be completely cancelled. So you will have
35 into 10 power minus 7 plus 1. So it is 10 power minus 6 Tesla. So the magnetic field B will be equal to 3.5 into 10 power minus 5 Tesla. So the magnetic field at a distance 20 centimeter from the wire is 3.5 into 10 power minus 5 Tesla. कॉपी कर लिया? Now we'll solve exercise 4.3. The question is a long straight wire. So there is a long straight wire in the horizontal plane. So the wire is placed on horizontal plane. मान लीजिए ये कोई horizontal plane है, यहाँ पे रखा हुआ है. There is a current of 50 ampere. So there is a current through the wire. That current is 50 ampere in north to south direction. So what is the direction of current? The direction of current is from north to south. We know the direction. This is north, this is south, this is east, this is west. So the current through the wire is in north to south direction. Give the magnitude and direction of B. So you need to find the direction also. You have to find out the magnitude as well as you have to find out the direction of magnetic field at a point 2.5 meter east of the wire. So wire से कितना दूरी पे? मान लीजिए यहाँ से किसी एक point पे, that point is P. Then the distance between the wire and that point is how much? The distance is 2.5 meter. So 2.5 meter दूरी पे, wire से 2.5 meter दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और डायरेक्शन कैसे होगा वो आपको निकालना है. सो करंट कैसा है? करंट इस तरीके का है. सो अगर हम लोग राइट हैंड रूल यूज करेंगे, so the current in the wire is in this direction. So what will be the magnitude of magnetic field? Magnetic what is the direction of magnetic field? Magnetic field ऐसे जाएगा. मान लो ये बोर्ड पे है तो बोर्ड के अंदर जाएगा. कैसे जाएगा? अंदर. अंदर जाके फिर बोर्ड के उस साइड से होके फिर इधर से कैसे आएगा? बाहर की तरफ आएगा. इसका मतलब पॉइंट पी में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये मान लो पॉइंट है तो ये पॉइंट पी है. पॉइंट पी में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी वर्टिकली अपवर्ड. होगा या नहीं होगा? फिर से देख लो, ये वायर है, करंट ऐसा है, ऐसा है, तो करंट कैसे जाएगा? ऐसे अंदर अंदर जाके फिर ऐसे निकलेगा. सो द वायर विल कम वर्टिकली आउटवर्ड फ्रॉम दिस प्लेन. So now you can use the same formula to calculate the magnitude. So you are having a current. So the current in the wire is, say I. The current in the wire is 50 ampere in the north to south direction. If the magnitude direction will be at a point, so what is the distance? Distance R is given as 2.5 meter. So what is the magnitude of magnetic field? Magnitude of magnetic field is B. It is equal to mu naught I divided by 2 pi R. So magnitude mu naught is 4 pi into 10 power minus 7 into current. What is the current in the wire? Current in the wire is 50 divided by 2 pi. What is R? R is distance, so it is 2.5 meter. So the magnitude of magnetic field B will be equal to pi will get cancelled, so it will be 2 into 50 into 10 power minus 7. This divided by, I can write it 25 into 10 power minus 1. 10 power minus 1 Tesla. So the magnitude of magnetic field will be equal to 25, so it will become 2. So ultimately it is 4 into 10 power minus 6. 4 into 10 power minus 6 Tesla. This is the magnitude of magnetic field. Along with this, what is the direction of this magnetic field? So the direction of magnetic field at this point is vertically upward. So you can write, applying right hand thumb rule. Applying right hand rule. Right hand rule. The direction of magnetic field is, direction of magnetic field is
vertically upward. Okay, so this is your third न्यूमेरिकल. कॉपी कर लीजिए. हो गया. Now we solve exercise 4.4. Question is a horizontal overhead power line. Horizontal overhead power line. Overhead power line आप लोगों ने देखा है, जो सड़क के पास आसपास जहाँ पे भी होता है ना, ओवरहेड पावर लाइन जो ऊपर से. पावर लाइन कहाँ पे होता है? सर के ऊपर से ही होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली ओवरहेड पावर लाइन बोलते हैं. So a horizontal overhead power line carries a current of 90 ampere in east to west direction. So the power line is carrying a current from east to west direction. So the current direction is from east to west and the magnitude is 90 ampere. What is the magnitude and direction of the magnetic field due to the current 1.5 meter below the line? So अगर मैं बोलता हूँ ये हमारा पावर लाइन है, इससे 1.5 मीटर बिलो द लाइन, अगर हम लोग बेसिकली सोचेंगे तो कहाँ पे सोचेंगे? ऐसे है कि नहीं है? ऐसा नहीं है. यहाँ पे बिलो द लाइन का मतलब क्या है? बिलो द लाइन मीन्स अगर मैं बोलता हूँ ये मेरा लाइन है, से दिस इज अ लाइन, इसके अंदर करंट जा रहा है, कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है. बिलो द लाइन मीन्स इसका बिलो इधर है, इस जगह पे. What is the magnitude and direction of magnetic field due to the current 1.5 meter below the line? Above the line means इधर, below the line means इधर. तो इधर करंट किधर है? करंट का डायरेक्शन ऐसे है. नाउ इमेजिन ऐसे जाके अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा. अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा, इसका मतलब कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है? इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है? ऐसे. इसका मतलब द मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग टुवर्ड्स द साउथ. इधर क्या है? नॉर्थ है. इधर क्या है? साउथ है. सो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है? साउथ की तरफ. ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड. सो द मैग्नेटिक फील्ड विल मूव टुवर्ड्स साउथ. ठीक है. तो मैं अभी इसको ड्रॉ करने के लिए से बता रहा हूँ. यहाँ पे कोई एक पॉइंट है बिलो द लाइन एंड द डिस्टेंस इज 1.5 मीटर. यहाँ पे चेक नहीं करना. यहाँ पे अगर चेक करोगे तो ऐसे देखो, अंदर जाएगा तो ऐसे लगेगा कि ये बाहर आ रहा है. ऐसा नहीं है. आपको एज्यूम करना है कि वायर के बिलो है मीन्स अंदर. तो अंदर जाके अगर देखेंगे तो ऐसे इधर जाएगा साउथ की तरफ. A horizontal overhead power line carries a current. So you are given current. What is the current in the word? Current is I. It is given as 90 ampere in east to west direction. What is the magnitude and direction of magnetic field to the current at a distance? So the distance is R. It is given as 1.5 meter below the line. So what is the magnitude of magnetic field? Magnitude of magnetic field. Magnitude of magnetic field is B and it is given as mu naught I divided by 2 pi R. So the magnetic field is mu naught is 4 pi into 10 power minus 7 into I. Current is 90 ampere upon 2 pi R is distance. What is the distance? It is 1.5. Magnetic field as a unit is Tesla. So this magnitude of magnetic field will be 2 pi. Pi will get cancelled, so it is 2. So 2 into 10 power minus 7 into 1.5, we can write it as 15 into 10 power minus 1. So it will become 10 power 1, 90 by 15, it is 6. So this much of Tesla. So what is the magnitude of magnetic field? It is 12, or you can say 12 into 10 power minus 6 Tesla. Or you can write the magnitude of magnetic field B as 1.2 into 10 power 5 Tesla. ठीक है. तो इसके साथ आपको और एक चीज लिखना है. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज we can find using right hand rule. So applying right hand rule, the direction of magnetic field is towards south. Direction of magnetic field
is towards साउथ। ठीक है, लिख लीजिए। हो गया। Now we'll solve 4.5. What is the magnitude of magnetic force per unit length? So we are going to find out the magnitude of magnetic force. Magnitude of magnetic force per unit length means per unit length पे निकालना है on a wire, किसी एक wire पे carrying a current of 8 ampere making an angle of 30 degree with the direction of a uniform magnetic field of 0.15 Tesla. If we consider that there is a uniform magnetic field, say the uniform magnetic field is this. So this is the uniform magnetic field, that is B vector. So there is a conductor. There is a conductor carrying current, and this conductor is placed at an angle of how much? At an angle of 30 degree. Say this is a conductor. Okay, चलेगा. So this is a conductor. What is the magnitude of magnetic force per unit length? हमें निकालना है magnetic force per unit length पे on a wire carrying a current of 8 ampere. So there is a current through the wire. Suppose the current through the wire is how much? 8 ampere. Making an angle of 30 degree with the direction of uniform magnetic field. तो ये एक एंगल बनाता है. That angle is 30 degree with a uniform magnetic field. So what is the magnitude of this magnetic field? The magnitude of magnetic field is 0.15 Tesla. सो आपको क्या निकालना है? फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है। सो आपके पास क्या दिया हुआ है? यू आर गिवन current. So the current in the wire is given as I. It is given as 8 ampere. You are given the angle between किसके बीच में एंगल दिया हुआ है? एंगल between length vector, that is L vector, and B vector, that is magnetic field vector, that is theta is given as 30 degree. And you are given the magnetic field magnitude. Magnetic field. So simply you can say it is B. It is given as 0.15 Tesla. So we are going to calculate the magnetic force per unit length. Magnetic force on the wire. Magnetic force on the wire is, what is the force? हम लोगों ने पढ़ा है, force acting on a current carrying conductor placed in magnetic field. It is given as IL cross B. So if you write the magnitude, that is ILB sin theta. So what is the force per unit length? Force per unit length of wire. Force per unit length of wire is small f. It is force divided by length. So ultimately this divided by length will get cancelled. So it will be IB sin theta. So if you write F, then it will be equal to I. What is current I? Current I is 8. What is B? Magnetic field. Magnetic field is 0.15. What is sin theta? It is sin 30 degree. So sin 30. So what will be this force? This force will be equal to sin 30 is half. So 1 by 2, 4. So it is 4 into 0.15 force per unit length. So it will be Newton per meter. So force per unit length, SI unit will be Newton per meter. So it will be 0.6 Newton per meter. So the force per unit length on this wire is 0.6 Newton per meter. So this is all about this class. Again we are meeting with another class, that is from exam exercise 4.6 to 4.10. Till then इसको अच्छी तरीके से देखिए, समझिए। बाय बाय। लिख लिए?